Assalamualaikum dear friends, welcome to my YouTube channel Mehrab Wali Voice. Today I am in your front with a new video. This is part 2. We can make part 1 of this video which is about impulse, okay? So in the previous video we can read about impulse, symbol of impulse, mathematical form of impulse, unit of impulse, etc. But in this video we can study about nature of impulse and examples of impulse, a lot of example which I can read in which I can give you a lot of knowledge about example of impulse and unit of impulse, okay? But after to start this important in this unique video, this is part 2, okay? We can make already part 1 of this video. Part 1 is in the previous video. This video I can make part 1 of this video, and this is part 2 about impulse. So if you are new to my channel and if you not subscribe my YouTube channel, so please subscribe my this YouTube channel Mehrab Wali Voice, and also press the bell icon button that you will never miss you any update, any video from my this YouTube channel, and also like and share this important in this unique video, because the background reason is that I can struggle a lot and I can make knowledge videos, knowledge content and informational videos. Then so please subscribe my channel. दोस्तों अपने YouTube के चैनल में आप सबको वेलकम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो और आज का जो ये पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 1 हमने बनाया था ऑलरेडी। इस वीडियो का पार्ट 1 चैनल में मौजूद है, मेहराब वली वॉइस में जो है वो मौजूद है। ये पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 बनाने का मकसद यही था कि पार्ट 1 में जो है हमने इम्पल्स पे बात की थी, उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की थी, बस थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की थी, ज़्यादा नहीं की थी। सो इम्पल्स की जो वहाँ पे डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म वगैरह, नेचर, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। यूनिट और एग्जांपल जो है वो तकरीबन आई थिंक बाकी रह गया था। सो ये पार्ट 2 मैंने चाहा कि आपके साथ पार्ट 2 भी शरीक करूँ। सो इस वजह से अभी मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। और अगर आप जो है इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटी सी वीडियो है, 4-5 मिनट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो वीडियो को लाइक करें। डिटेल में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट और ऐसी मालूमाती वीडियोस के अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पे मिल सके और किसी भी वीडियो को आप मिस न करें। क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ आपके लिए ये सारी मेहनत होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल इन यूनिट ऑफ नेचर इज अ यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन, ठीक है। इम्पल्स का जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड है। न्यूटन सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ जॉल इसका जो है, जे इसका रिप्रेजेंटेशन है। सो इसी तरीके से ये सारा डिपेंड करता है यूनिट पे, मैथमेटिकल फॉर्म पे। जैसा मैथमेटिकल फॉर्म होता है वैसा यूनिट होता है। सो इसमें ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड, ठीक है। इन इस मतलब न्यूटन सेकंड इसका जो है क्या है, न्यूटन सेकंड इसका यूनिट है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो a cricketer flared while catching a ball lowered his hand. ये बस सिंपल है, जो मैं आपको बताता हूँ। A cricketer flared while catching a ball lowered his hand in the direction of the ball. If the total यहाँ पे इसको छोड़े एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है। A person falling on a cemented floor gets injured more where a person falling on a sand floor doesn't get hurt. For the same reason in wrestling, high jump or soft ground etc. So ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो, ये पार्ट 2 पसंद आए हैं, सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।